Good evening, everyone. In this lecture, we will know about East Punjab Urban Rent Restriction Act 1949, which came into effect from 25 March 1949. Now, the significance of this act, we shall cover this all in this lecture. Before we or you or anyone, if facing a question, a proposition in which a person is in possession of a property not as an owner, you need to know the nature of possession. You need to know whether it is a license or a lease or a tenancy. If it is a license, Section 52 Easementary Act will apply. There will be only exclusive right of possession. There will be no interest in land. When it is lease, it will be covered by TPA Section 105 onwards, and it will be exclusive possession in exclusive right of possession, that is demise is transferred plus interest in land. When it is tenancy, same as lease. The difference in tenancy and lease is of eviction. Eviction के लिए ड्यू प्रोसीजर फॉलो किया जाता है रेंट एक्ट का फॉर टेनेंसी, एंड टेनेंसी लैंड और बिल्डिंग के लिए होती है, और लीज की जहां तक हम बात करें तो लीज होती है immovable property. TPA defines it as other than standing timber, going crop grass. We'll go to the deep at what is land when we'll do Registration Act 1908 little later. और सेकंड चीज आती है eviction. Eviction के लिए नोटिस देना पड़ता है as per the provisions of TP. Now it depends. Facts of each case. It's a lease or a tenancy. और लॉ ने हमारे जो कि केस का नाम मैं एक साइड तो लिख चुका हूँ, एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया वर्सेस R.N. Kapoor. It is held in this case that the real test कि ये लीज है, लाइसेंस है, टेनेंसी है, is intention of parties. What is the intention of parties is? So हम फर्दर चलते हैं कि ये रेंट एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है. रेंट एक्ट का ऑब्जेक्ट देखना है आपको. ईस्ट पंजाब अर्बन रेस्ट्रिक्शन एक्ट का प्रीएम्बल खोल लीजिए. इट इज टू रिस्ट्रिक्ट द increase of rent. It is to check the eviction of tenants where the premises is in urban area. So urban area पे अप्लाई होता है ये, और दो इसके मेन पर्पस है: restrict the increase of rent and regulate the eviction of tenants. यही चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हरबिलास राय बांसल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी रीइटरेट कर दी. That what does rent acts do? What do rent acts does? Sorry. Honorable Supreme Court said that rent acts regulate the conditions of tenancy. कैसे? By controlling the rent and preventing unreasonable malafide eviction. And for this purpose, certain rights have been given to the tenant and complementary obligations to the landlord. दूसरा लैंडमार्क केस आता है अमरजीत सिंह वर्सेस खातून कुमार. I write down the name for your convenience. खातून कुमार. मुझे भी देख के लिखना पड़ रहा है because कुमार is something. In this case, it was held that rent acts are beneficial legislation to protect the victimization of tenant at the hands of landlord. And secondly, they are the these are the beneficial legislation, right? These are the social legislation to protect the interest of the weaker parties in the matters of letting very often. जब किराए पे दी जाती है चीज, उस पॉइंट पे हमने वीकर पार्टी का इंटरेस्ट सेव करना है, इसलिए है ये रेंट एक्ट. इट्स अ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन, इट्स अ सोशल लेजिस्लेशन. सो फर्दर अगर हम चलें
पॉइंट हमारे सामने ही आता है कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ रेंट एक्ट्स. रेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया इज द फॉल आउट ऑफ वॉर. वर्ल्ड वॉर वन हुई तो बॉम्बे, कलकत्ता, रंगून, प्रेजेंट डे मायनमा में रेंट एक्ट्स आए. तब इंडिया में उसको भी कवर करता था. खैर मैं गया तो हूँ नहीं इंडियन हिस्ट्री में इतनी डेप्थ में. जिस दिन जाऊंगा उस दिन आपसे जरूर शेयर करूंगा व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ म्यांमार vis-a-vis इंडिया इन 20th century की बिगिनिंग. एनीवेज वी कम बैक टू द लॉ. वर्ल्ड वॉर वन के बाद तो बॉम्बे, कलकत्ता, रंगून में आए तो बाकी इंडिया कहाँ जाएगा. तो टीपीए तो तब से है, 1882 से है टीपीए. So TPA was governing the landlord-tenant relationship. But when World War II took place, there was a huge rush of people, huge migration, exodus from rural to urban areas for the purpose of livelihood, business, residence, and the acute shortage of accommodation come forward. Hence, Middle India में और Eastern India में न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, यूपी में रेंट टैक्स है. As far as Punjab is concerned, पंजाब में भी रेंट एक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही आया. सिंस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1938 से 1944 तक चली आई. हिटलर ने तो तभी सरेंडर किया था. हम उधर नहीं जाते, हम सिर्फ इधर रहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 का आउटकम है पंजाब में. that the rent legislation in Punjab is the outcome of World War 2. Due to World War 2 there was a shortage of funds to the Britishers. Hence, they imposed additional tax in the form of Punjab Urban Immovable Property Tax Act. Secondly, they were aware that the urban immovable properties are occupied by well-to-do persons. Hence, they could pay the rent. They could pay the higher rate of tax easily. वो easily pay कर लेंगे. Hence, उन्होंने ये लगा दिया. Secondly, British government was in need of accommodation in urban areas to serve their officers who are at war, who were working in the war, giving their services in the war. So, इसका outcome ये हुआ that additional tax were imposed by the government, British government, was completely passed on by the landlord to the tenants, and whoever was not paying that level of rent was being evicted, and the premises was given to the one who was paying the heavy rent. Taking note of this mischief, the situation, they came up with the legislation very quickly. जिसे कहा गया Punjab Rent Restriction Act 1941, and it was clearly mentioned that this act is for 5 years. And the landlord would not increase rent because of imposition of additional tax. The Act of 1941 was replaced by Punjab Urban Rent Restriction Act because 1940 में आया Punjab Urban Immovable Property Tax Act. 41 में आया Punjab Rent Restriction Act. 47 में आ रहा है Punjab Urban Rent Restriction Act. इसमें फेयर रेंट, बेसिक रेंट को फिक्स करने का प्रोविजन था, प्रावधान था, और सीपीसी गवर्न करती थी इन केस ऑफ डिस्प्यूट between the landlord tenant. And thereafter the partition of India and East Punjab came with India and West Punjab left with Pakistan. And because of this, again large migration from Pakistan to India, the problem of housing became more acute. To tackle this problem, East Punjab Urban Rent Restriction Act was enacted on 25th of March 1949. There was two reasons behind this. That Article 6 of Indian Order clearly states that any act being enacted under Government of India Act 1935, it would be effective only for 2 years. Hence, अगर ये मार्च 1949 में नहीं इनेक्ट करते तो अगस्त में ये पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1947 तो वैसे एक्सपायर हो जाना था. Hence this. सो पंजाब रेंट एक्ट हमें पता लग गया लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप को गवर्न करता है और अर्बन एरियाज में गवर्न करता है.
एंड यूटी ऑफ चंडीगढ़ में भी गवर्न करता है, अप्लाइज टू सीएचटी, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ टू चंडीगढ़ एक्ट 1974 में है, जस्ट लाइक ईस्ट पंजाब अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट 1949 में है। अब अर्बन एरियाज क्या होते हैं, विच आर बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नोटिफाइड एरिया कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड। और पंजाब अर्बन रेंटल सेक्शन एक्ट में क्लियरली लिखा गया है दैट कंटोनमेंट बोर्ड पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। सेकेंडली, स्टेट गवर्नमेंट किसी एरिया को भी एग्जम्प्ट कर सकती है कि उस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, रेंट एक्ट and Article 14. From the first look, they are giving unequal treatment to landlord and tenant. But we have to see it in the light of Amarjeet Singh versus Khatun Kumar case. इसमें कहा गया, these are the beneficial legislation and social legislation. So स्पेसिफिकली अगर इस टॉपिक पे बात करें, रेंट एक्ट एंड आर्टिकल 14, की सब 19(1)(g) क्या कहते हैं, 19(1)(g) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। तो क्या हमने एविक्शन क्या डिसअलाउड कर दी? लैंडलॉर्ड एट द टाइम ऑफ लेटिंग वेरी ऑफन, हमने उसे फोर्स नहीं किया कि किराए पर दे किसी को। लाइक इन हिमाचल रेंट एक्ट, देयर इज अ प्रोविजन दैट a premises which is vacant, and if a person who feels like this premises should be given to him as a tenant, he can go to the controller, and controller can insist the landlord to give the premises to the concerned tenant for a certain period. However, there is no such provision in the Punjab Rent Act. So if the person is willingly giving a premises to the tenant, eviction shall be as per legal grounds, article 13, section 13 of East Punjab Urban Reconstruction Act, not on a flimsy ground. This is one ground. एविक्शन का राइट दिया इसलिए वायलेशन नहीं है। सेकेंडली, व्हाट आर्टिकल 14 स्टेट्स? आर्टिकल 14 स्टेट्स इक्वालिटी अमंग इक्वल्स एंड लैंडलॉर्ड टेनेंट इक्वल नहीं है, एंड रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज अलाउड, सो देयर शुड बी क्लियर नेक्सस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स शॉट टू बी अचीव्ड एंड द क्लासिफिकेशन। एंड ऑब्जेक्ट शॉट टू बी तो हो रहा है, और वीकर पार्टी है वो स्ट्रॉन्गर पार्टी। Hence, these were the main provisions as far as introduction of Rent Act is concerned. We'll discuss the Bear Act and the provisions in the light of mains in the next lecture. Thank you.